और भाई क्या हाल है? सब बढ़िया। तो आज करते हैं आज का लीड कोड क्वेश्चन। क्या गिवन आज अपने को? कॉन्केट नॉन जीरो डिजिट्स एंड मल्टीप्लाई सम बाई टू। तो कल वाले ही क्वेश्चन का अगला पार्ट है। बस द ओनली डिफरेंस इज द कंस्ट्रेंट्स। तो आज यहाँ जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल्स टू 1E5 हो सकता है। प्लस हमें आंसर करना है क्वेरीज में, राइट? क्वेरीज एक 2D एरे जिसमें LI RI गिवन है और हमें इस रेंज के लिए आंसर करना है। तो ओके, देखते हैं क्या गिवन है। एस गिवन है अपने पास, लेंथ जिसकी एम है, 2D इंटीजर अपने को क्वेरीज गिवन है। ओके, सब स्ट्रिंग गिवन है LI to RI। ओके, फ्रॉम अ न्यू इंटीजर एक्स। ठीक है, तो सेम सेम क्वेश्चन है। एक नया इंटीजर एक्स बनाना है जो क्या होगा, राइट? रिमूव जीरोस प्लस कॉनकैट स्ट्रिंग प्लस कॉनकैट, ये अपना एक्स होगा। सम इक्वल्स टू क्या होगा, राइट? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स, ये अपना ये होगा। ओके, मॉड्यूलो अपने को यूज करना है। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मतलब एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, कैसे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, क्या अप्रोच लेना है। तो पहली चीज तो ये देखो, 1E5 गिवन है अपने को, है ना? क्वेरीज गिवन है अपने को। तो अगर हम डायरेक्ट अगर जाके एल से आर रेंज के अंदर करने वाले हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी N×Q, जो क्वेरीज की है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁹ हो जाएगी। तो ये ऑफ है, कभी चलेगा ही नहीं, TL ही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ना कुछ फिक्स सेट ऑफ टेक्निक्स होती हैं जो अपन यूज करनी होती हैं अपने को, मतलब पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहली चीज ये सोचो, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन गिवन है जिसके कंस्ट्रेंट 1E5 के अराउंड है लगभग, है ना? और उसमें तुम्हें कोई भी मैक्सिमाइज नहीं करना, कुछ भी मिनिमाइज नहीं करना है। अगर मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता तब तुम्हें बाइनरी सर्च लगाना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती ऑफ एन log n। अगर तुम्हें ये नहीं करना है, इफ नो, ठीक है, ये डिसीजन तुम्हें उस पॉइंट पे लेना है, नहीं करना, तो सोचो कि तुम्हें प्रेफिक्स सम्स अब कैसे भी कैसे करके उसमें यूज करना है। मतलब ये 70 to 80% क्वेश्चन सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तुम एक पॉइंट पे एक डिसीजन बनाओ, क्या मैक्सिमाइज मिनिमम पूछा है, यस, बाइनरी सर्च की साइड सोचो। क्या मैक्सिमाइज मिनिमम यूज करना है, नो, प्रेफिक्स की साइड सोचो। यहीं पे कभी कभी ग्रीडी भी आ जाता है, बट ग्रीडी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट केस। जब जब ग्रीडी आता है तो मतलब हमें देखना पड़ता है क्या अपन एक पॉइंट पे ऐसा डिसीजन लें जो कि नेक्स्ट वाले को बेसिकली अफेक्ट कर रहा है, और ऐसे ही जाके बस वो एक फिक्स पैटर्न में हमें करना है तो फाइनली आंसर आ जाता है। ग्रिड इज डिफरेंट। तो यहाँ पे अब हमें कैसे भी करके यूज करना है प्रेफिक्स सम्स। तो अब हम देखते हैं हमें कैसे यूज करना है। कि लेट मी रिमूव दिस पार्ट। ओके, सो अब जैसे ना तुम्हारे पे एक स्ट्रिंग गिवन है, ऐसे एक बार देखते हैं, 1 0 2 0 3 0 0 4, है ना? तो इसको एक बार अपन ऐसे लिखते हैं, ये गिवन है इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7। 1 है, 0 है, 2 है, 0 है, 3 है, 0 है, 0 4। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमको L, R रेंज के लिए हमें रिपीटेटिवली आंसर करना है ना, तो पहला तो हमको सम ऑफ डिजिट चाहिए। तो ये तो क्लियर, अपन प्रेफिक्स सम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्रेफिक्स सम अपना बना लो। पहला 0 1, ये कितना हो गया, 1, राइट? ये कितना हो गया, 3 3 6 6 0 ना, 6 10, प्रेफिक्स सम हो गया। दूसरा, अब हमें चाहिए L to R रेंज के बीच में हमें चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग जीरोस, हमें ये चाहिए। तो सेम एक बार ये देखो, अगर मैं प्रेफिक्स बनाना शुरू करता हूँ, जीरो से मैंने शुरू करा, ठीक है, पहला 1 था तो यहाँ 1 होता। अगर चलो जीरो में हटाता हूँ, है ना, तो अभी भी मेरे पास स्ट्रिंग क्या होती, 1 होती। 2 जब आया तो मेरे पास स्ट्रिंग क्या होगी, 1 2।
जब जीरो आया तो मैंने ये हटा दिया, राइट, वन टू हो गई। जब मैं थ्री पे आया, राइट, तो अपने भी प्रेफिक्स स्ट्रिंग क्या हो गई, वन टू थ्री हो गई। जब मैंने ये करा तो सेम वन टू थ्री रह गई, मैंने हटा दिया, वन टू थ्री रह गई, ये आया तो हमने ऐड कर लिया, वन टू थ्री फोर हो गई। तो ये मेरे पे बेसिकली नंबर है, राइट। स्ट्रिंग को हमें फाइनली क्या करना है, इस एल टू आर रेंज के बीच में हमें वो नंबर चाहिए जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है ना। ओके, अब ये स्ट्रिंग वन, राइट, वन ही फाइव तक है, तो मतलब इतना बड़ा इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, राइट। इंटीजर में आंसर करना है तो 32 बिट नंबर ही होगा, ठीक है। तो उसी के लिए हमें लेते जाना है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो गिवन वन ई नाइन प्लस सेवन। ओके, तो जब मॉड्यूलो लेंगे तो हमेशा ये जो आंसर है ये लेस देन 32 बिट ही रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, जब हम ये, राइट, ये प्रीफिक्स नंबर जब हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो उस समय हम हमेशा मॉड्यूलो लेते जाएंगे। तो मैं ऐसे करूँगा, राइट, जैसे कोई भी एक नंबर है, इसके बाद एक ऐसे बड़ा सा नंबर आया मेरे पे, वन टू थ्री फोर, लाइक फाइव से लेके सम कुछ भी डिजिट्स आए, तो मैं इसका मॉड्यूलो लेके उसको स्टोर करवाने वाला हूँ बेसिकली। तो ये हुआ। अब ठीक है, ये तो हमने कॉन्केट कर लिया इनको, बट कॉन्केट करने के बाद तुम्हें एल टू आर रेंज में बताना है कि सबस्ट्रिंग थी क्या, क्या नंबर था इस सबस्ट्रिंग का। तो जैसे मान लो अगर एल टू आर मेरा होता, मैंने दिया होता वन कोमा थ्री, राइट। तो वन कोमा थ्री मतलब क्या, वन और वन टू थ्री, तो राइट, थ्री पे अपने पे स्ट्रिंग क्या है, वन ट्वेंटी, क्या है, ओके ओके ओके, ये हमने गलत वो करा है, वन वन टू, नहीं नहीं सही करा है, वन और थ्री, वन और फोर पे है ये। तो अगर हम वन टू थ्री लेने वाले हैं तो अपने पे है ये ज़ीरो, वन टू और वन टू। तो बेसिकली वन टू है अपने थ्री पे, राइट। वन पे अपने पे क्या है, वन। और हमें दिख रहा है, राइट, कि अगर मेरे से पूछा होता जीरो से, वन से थ्री अगर रेंज होता तो मेरी सब स्ट्रिंग क्या बनने वाली है, राइट, जीरो टू जीरो। और जीरो से मुझे मतलब नहीं है तो ये फाइनली क्या बनने वाली है, टू। तो मतलब मेरे को इसमें से सिर्फ दो चाहिए। और ये कैसे निकाल सकता हूँ, मतलब एक जैसे मान लो एक नंबर है, एल लेंथ का एक नंबर है तुम पे, राइट, वन टू थ्री फोर फाइव। तुम्हें निकालना है, अगर तुम इसमें से ये यहाँ तक अगर तुम माइनस करते हो, इसके बाद तुम्हारे कौन सा हुआ आया होगा, सेकंड पोजीशन के बाद तुम्हारा कौन सा नंबर हुआ होगा, तो तुम क्या करने वाले हो, जो सेकंड पोजीशन तक है तुम्हारा नंबर, राइट, जो तुम्हारा सेकंड पोजीशन तक है उसको किससे मल्टीप्लाई करने वाला हो, टेन की पावर क्या, कितने वहां पे आगे डिजिट्स आए तुम्हारे, राइट, नंबर ऑफ डिजिट्स। और ये तुम अगर इस नंबर में से माइनस कर दोगे तुम्हारे, तो तुम्हारे पे आ जाएगा, राइट, थ्री फोर फाइव आ जाएगा। मतलब अगर वन टू थ्री फोर फाइव है, राइट, एंड वी सब्सट्रैक्ट थ्री फोर फाइव इज, राइट, वी सब्सट्रैक्ट 12,000, 12,000 is what, right, we need the number between range this one, right, second position to fifth position, right. So what do, we take this entire number, what do we subtract the number we have till second position, number we have till second position, multiply by what, power of 10, what power, the total, right, the range difference between the right and left. So what do we get, 345। ओके, तो अगर अब सेम मेरे को इस क्वेश्चन में आंसर करना है, राइट, तो लेट मी चेंज दिस कलर वंस, है ना। ये अपने पे सब स्ट्रिंग्स थी, ये अपने पे था प्रेफिक्स नंबर, ठीक है। अब मैं एक चीज लेता हूँ, काउंट, काउंट ऑफ जीरो, क्योंकि अगर मुझे बताना है एल टू आर रेंज के बीच नंबर तो मुझे पता होना चाहिए ना कितना उसमें काउंट ऑफ नॉन जीरो नंबर्स बेसिकली। क्योंकि जब हम सब स्ट्रिंग बना रहे हैं तो जीरो तो हम हटा दे रहे हैं, तो आर और एल इंडेक्स के बीच में कितने नॉन जीरो डिजिट्स मेरे ऐड हुए हैं। जैसे मानो अगर इस केस एग्जांपल में अगर थ्री फोर फाइव मेरा एल और आर के बीच में ऐड हुआ है, तो मैं इसमें से क्या हटाने वाला हूँ, टोटल नंबर, राइट, प्रेफिक्स ऑफ आर माइनस क्या करने वाला हूँ, प्रेफिक्स ऑफ एल मल्टीप्लाई क्या करने वाले, पावर ऑफ व्हाट, 10, द नंबर ऑफ काउंट ऑफ नॉन जीरो। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट।
Okay, so we'll maintain one another prefix for zeros, right? So for the zeroth index, we have non-zero number 1, we have 1, 2 we have, 2 we have, 3 we have, 3 we have, 3 we have, and 4 we have. Okay, so now if we have all these three things, then can we answer a query of L, R in of one time complexity? Yes, we can do it. How? Right? सबसे पहले sum is what? Right? It's a prefix sum of r plus 1 minus prefix sum of L, right? Okay. Non-zero count equals to what? Right? Prefix of count, right? Same r plus 1 minus prefix of count L. Just this prefix is same prefix, okay? And last is what? What will be the number? Number is what? Right? Prefix of number r plus 1 position. See this one. The number we have till r plus 1 position minus, right? Prefix of L. Prefix number of L. What do we have till L position? 1, 2, 1, 2. We have to subtract from this entire number 1, 2, multiply 10 power of count of these digits, right? So what do? We do, right? Power of 10, and what we are going to do here? Power of 10 and right? The non-zero numbers. This is what we are going to do, right? So if I have all these three things, then I can do, right? The for answer of I, right? For each query, I can say it is effectively sum multiply number from above, right? So what is my final time complexity, right? Prefix will run in of n, right? Each prefix. Then if the queries, right? Queries will run in of q time complexity. So total time complexity is what? Of n plus q. Space complexity is what? Of n plus q again, right? N to store the prefix, q to store the answer. Okay, so this is the final answer. So these three things we need basically. So you have to come to these formulas. Once you get these formulas, then coding part is very easy. So you have to get to this point, how to create the prefix sum, how to create the prefix count. Count is basically between range R to L, how many non-zero elements are there. Then this is important, how to create the this is important, how to create the number. So number is what? The number I have till the right plus 1th position minus what I have the left position multiply by the power of 10. So it's just simple, right? Say I have 123. I need what is the number till second unit place, right? 12. If I have to find what digit I added at the third unit place, right? We do 123 minus what we have till the second digit place, right? Multiply by the 10, right? We get 3. So it's the same thing above. Okay. So yeah, आ गया समझ. एक बार वापस देख लेना, नहीं समझ आए तो, अगर फिर भी नहीं आए तो एक नीचे कमेंट कर देना. ओके, ठीक है. अब लेट्स गो टू द कोड पार्ट. So we are going to do three things, right? First we need prefix sum. Okay, second we need prefix what? Num. Third, what do we need? Right? Prefix count. Then what do we need for? Answer. Okay. The important part is how we are going to calculate a num basically, right? How to calculate num of al comma r, right? This is important thing. So what it is? It's nums of, right? It's prefix num of what? Right? R plus 1 minus what? Prefix of lth position multiply by what? Power of 10. What power? The count, right? Prefix of count r plus 1 minus prefix of count of l. This. So okay, so let's start. Int m equals to s dot length. We have to define, right, three things. Long star.
prefix sum equals to what? New long m plus 1. So why we do m plus 1? So that we don't have to check for the condition in prefix if it's I equals to 0, right? We check for the previous one, right? So we do m plus 1 so that ith index goes to I plus 1 so that we can easily do r plus 1 minus left. When we do left, left is not included. So remember this one. Then prefix of num equals to what? New long and same m plus 1, right? Prefix of count equals to what? Same m plus 1, right? Okay. What do we need? We need one more, right? Long mod equals to what? 1e9 plus 7. Then what do we need? We need to prepare the above, right? So and I equals to 0, y less than m. What we are going to do? I plus plus, right? So what it is, right? Prefix sum of I. Then same goes to prefix num, right? Prefix num of again I, right? Then prefix of count of I plus 1, what? Same again I, right? For the previous one. Then we check, right? Long current equals to, we will take everything long, right? So that we don't have to check the overflows later. Long current equals to what? Long type conversion, right? S dot char at what? I position minus, right? 0. Okay, then we check if current equals to 0, right? If it's 0, we are going to continue. We don't want to do anything here. So if it's not 0, then prefix of sum of, right? I plus 1 plus equals to what? We are going to add the current to the prefix sum. So prefix sum of num equals to what? So you do multiply by 10 by the previous, right? If let's say if you have the number 12, right, and you want to 3 to it, what you do? You do, right? 12 into 10 plus 3. That's what we are going to do here, right? We are going to do prefix of n plus I multiplied 10. And why I do I plus 1 here? Because I already added the previous. Multiply 10, right? We have to take mod here because it can overflow. We'll take mod plus what we do. Plus we add the current and then we again take the mod. That can again overflow. Okay. And what is prefix count of I plus 1? We will increase the count by 1 because the number is non-digit, right? Okay. So once we have all the, then we need the int, right? Answer equals to new int. What it will? It will be q. Let me take it as q only there. Q dot length. Okay, then we have to iterate over q, right? For int queries, right? Inside q, L is what, right? Q of 0, R is what? Q of 1. Okay, we have L and R. Then we need the sum, right? So what do we say? Long sum is what? Prefix sum of R plus 1 minus prefix sum of L, right? Now long count equals to what? Prefix count of R plus 1 minus prefix count of L. Okay. Then long number equals to what? Prefix num of R plus 1 minus right? Prefix num of left multiply by right power of 10. Okay, we actually need power of 10. So it will add a log n time complexity. So we can pre-calculate the powers of 10 as well. So let's do one more thing here, right? Long power 10, right? Equals to what? New long. Oh, just log n will not make much effect, so let's not optimize it that much. But if you want, you can just optimize it, right? M plus 1. So we'll make a power function. So in the power function, what we have to pass, right? 10. And what is next is r minus l plus 1. No, sorry, count basically. Count we have to pass. Okay, now we have to take mod. So sum, right? This prefix of sum, it is fine. When I do prefix of count minus, right? This multiply can become bigger, right? So I will do mod. Yeah. Okay. No, once again, it is fine, right? Power of 10, it is fine. This one, right? Now this entire number can become negative. So we'll do plus more, multiply more. So I think we are correct. The brackets are correct, right? Oh, maybe we are missing one bracket. This one, multiply more. This one does that. We need one more bracket here, right? So this is our number. Now we need the power function, right? Private long power function, right? We need long x. So we'll pass it 10L basically. So we'll do both long, right? Again for the same purpose. So if base case, right? So we say, right, if y equals to 0, we have to return one L. If y equals to right, we have to return x. Okay. Then
So log n, right, you can easily find, we can do it. So if there's a unit 2 raised to power 4, you can do, right, 2 raised to power 2 into 2 raised to power 2. So we'll find the half power. Long half power equals to long, right? Long power equals to what you do, right? You do power of x comma y by 2 multiply same thing, right? X comma just you can realize half power, right? Then long power equals to what? You do half power multiply by, now this can overflow, so we'll take a modulo here. Then what we have to return? We have to return power multiply. We check if y is odd number, right? If y is odd, right? If you, let's say you need 10 raised to power 3, then the half will be what? 1. So 10 raised to power 1 into 10 raised to power 1, but we are still missing 110, right? So we'll do this, right? If it's 0, we need 1 return. Otherwise, what do we return? We return the x only. So this is long. This entire thing can again become, right? So we'll take a modulo again here. Just don't miss the modulo. It is important. Okay. So now we have to update also, right? Answer of I. Okay. So this loop, it's better if we do the I loop here, right? Let's do anti I equals to, right? I equals to 0, I less than, right? Let's say q dot length I plus plus, I can say, right, q of I1. Nice. Say I0, and we can say, right, answer of I equals to what? Type conversion to int, and what do we have, right? We have num modulus sum, right? We have to do its mod. Okay, and we have to return the answer. Things good, look good. We did this one. Let's see what do we have now. Okay, 1 second. We again have something. What did it say? It's q now, right? Not q. Okay, all test case passed. Let's say submit. Yep, good. So the time complexity is now, you can say it's what do we say, right? Time complexity is what? Big of n plus, right, q, log of n basically. So we can optimize this logarithm part as well. Let's see how you, if you want. So let's say I define this log power 10, right? Then I did right, process. So right, anything, just say process, right? What we are going to pass power to the 10 until, right, how much numbers we need. Let's say m basically I'll pass. Okay, so I'll say process, right, long, right, power 10 we need, right? And the next is m, right? So int mi squared, right? So what we are going to do, for int I equals to 0, I less than equals to mi plus plus. So what do I say, right? Power of 10 of I equals to what? So the same, we'll use the power function, right? Power function 10 raised to power I, we can say, right? Since this will be modulo, I think this will fine, and later I can use the power 10 of count here, I think, directly. I don't know. Let's see what do we have right now. Okay, so private function return type is void. Incompatible type. What did it say? From long to end. Why they said long to end? Power is long, right? Power is long. Count I said long, right? So this is uh, incompatible type, possibly lousy conversion from long to end. Which point, right? Power is long. 10 raised to power I. The second point is long. Okay, so this is wrong, right? So we need long m multiply 1l, right? I don't know. Let's see what do we have now. The same thing, right? Lousy conversion, right? Count. Power 10 is long, so we don't have any problem there. The argument count, right? Count is also long. Is it conversion to? I don't know. Let's see what do we have if I say long and referring to index, right? This will just improve the time complexity to TC becomes what? Big of n plus q plus the c. Internet is slow. Okay, think anti count. What did we do? R plus 1. Okay, so this works. Let's submit.
So it's a little bit slow this time. And let's see what's the time complexity. M log m q. Why m log m? Still did not use power, right? Use power 10 pre-computed. Okay. So this is still running in m log m, right? If we pre-compute. And how can we get the powers in log n? Can I get from previous 10? If I say I start from 0, then right, power of 10 with power 0 equals to what? 1, right? So what do we say? The next power, right? Power of I less than m. What do we say, right? I plus 1 equals to what? Okay, this is wrong, right? Power 10 of I. What we have in the previous position, we multiply by 10 and we take a modulo. Okay, yeah, got it. Because we again did use the same power function, right? But if we have the previous power, then we can simply calculate the next power using that. So I think this time it's better. See, 100%. So yeah. So let's analyze the time complexity as well. Okay, you see now it's m plus q. It's great. Yeah, thanks